stuff. We will start continuing with our previous discussion. Last time we did for two charged particles, dipole, who do not collide. We found some expression without collision. Now in this class, we are going to take into consideration after collisions. If two charged particles, what are the expressions, corresponding expressions we are going to find? So, for example, last time we found at the end, we defined the function, the intensity of the radiation, which came out to be. So it came out to be first in Bessel functions, then Airy functions, and then McDonald functions. So at the end we got the expression in terms of K's. So that was purely for a dipole, two charged particles. From that, how we can find? Because we are basically हमारे दिमाग में ये था कि जो intensity of the radiation is basically produced by dipole which is accelerated. Okay, and from that we got the expression of intensity. अब उसी intensity को हमने this calculation we just arrived at radiation in case of Coloumbic interaction. Now what we are going to do is we are going to consider collision of with the collision of two attracting charged particles. Attracting of charged particle. तो हम इसमें if you remember हमने last time किया था collision effective हमने we did something called effective dipole radiation due to collisions. So हमने वहाँ किया था effective radiation. Okay. Two concentric spheres. ठीक है? वो हमने उस cross section निकाला. What we use that understanding here and our understanding of previous class to arrive at some expressions. We are going to calculate the collisions of two radiating particles at higher frequencies at lower frequencies. ये हमारा मकसद है आज की क्लास का. ठीक है? To begin with, if you remember, again I would like to just go and see classical mechanics first of all. उसमें जो expressions हैं for collisions of two particles क्या आता है? Two particle system क्या आता है? ठीक है? That will come handy in our derive this thing. So I'll just straight away write we have one epsilon cos phi. Relative motion of particle with mass mu is basically a hyperbolic motion. ठीक है? उस hyperbolic motion को हम ऐसे calculate करते हैं. This is the eccentricity of this. And value of A comes out to be this, and epsilon का value आ रहा है this. ठीक है, that's it. For epsilon between. So the time difference R is given by parametric equations. Parametric क्या होता है? Parametric equations is sometimes we parameterize right R in terms of some another things, in terms of X and Y. In case of R, for circle. So R is basically X and then also write R as X cos theta and R is equal to यहाँ से आप x square plus y square. So it's given coordinate system को how we can write it in terms of alternate coordinate system. ठीक है? So in the same way, if you remember, तो हम R को हम ऐसे लिखेंगे R in
these coordinates you are going to write it like this in terms of if you want to for square multiplication और ऐसे ही टाइम कोऑर्डिनेट हमारा जो है it will come out to be simplest case, but in the case of with these parameterizations, how we can write our t and what I should say other things. और अब ये है sin of x zeta minus zeta. Where zeta as a parameter may run from minus infinity to plus infinity. And for coordinates, or in terms of x and y will be x will be equal to what should zeta, y को हम लिखेंगे in terms of epsilon prime. अगर आप ऐसे एक्सरसाइज करोगे कोएफिशिएंट e to the x plus e to the minus x जो भी 2 i बटा ये है, तो आप फिर उनका ग्राफ होगा x and y, ठीक है, and see whether that will correspond to our definition of hyperbola है कि नहीं, ठीक है. Simply plain and pencil exercise that will make you. तो ये क्या constructions हैं, explicit constructions of parameterizing power in terms of value a and in terms of this x and y. It corresponds to how this parabolic motion को correspond करेंगे. अगर आप pencil paper से ग्राफ डालेंगे x y सब का, then it should come out parabolic, ठीक है. अब यह है कि अगर आप रिमेंबर मैं थोड़ा सा इसको रिहैश कर दूँ तब परसों वाली क्लास में क्या किया था, हमने भी ऐसे ही लिखा था x इक्वल टू a cos zeta minus epsilon, y is equal to a root of 1 minus epsilon sin zeta, and omega t को लिखा था हमने zeta minus sin. अब इसमें यह है कि हमने पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट किया था x डॉट एंड फिर x डॉट को इन टर्म्स ऑफ x लिखा था, ठीक है, x डॉट को हमने ऐसे लिखा था. इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, यहाँ साइन आ गया, फिर राइट इट लाइक दिस i ओमेगा ओमेगा नॉट एन x डॉट. फिर यहाँ से xn को लिखा था ऐसे, xn को xn डॉट की फॉर्म में लिखा था ऐसे लिखा था, एंड it went from to be before iota xn, इसको लिखा था, you could write it as this, ठीक है. x को एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे वहाँ वेलोसिटी आएगा, y को डिफरेंशिएट करोगे वहाँ y डॉट आएगा, ठीक है. y डॉट एंड x डॉट बेसिकली वो इंटीग्रेटिंग इट. पिछले टाइम में हम इंटीग्रेट कर रहे थे. इफ यू वांट टू राइट दो पार्टिकल्स का अगर मूव इन द सेंटर पोटेंशियल दे वर मोशन ऐसे थे, ठीक है, उसको इन टर्म्स ऑफ हमने cos एंड sin में लिखा था, फोरियर फॉर्म में लिखा था, एंड उसको फिर लिखा था हमने इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन. उसमें एक इंटीग्रल हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा था, साइन इंटीग्रल, एंड इट वाज आइडिया x का cos of x ऐसे. So we can take it as ये हाफ सर्कल हो गया, वो था सेंट्रल पोटेंशियल, ठीक है, बट द एनालॉजी इज मोर और लेस सेम. तो हम x y से निकालेंगे x डॉट एंड फ्रॉम दिस x n को हम ऐसे लिखेंगे और x डॉट. So this thing we have to use here. एंड फर्दर हमने क्या लिखा था, ये वाला एक्सप्रेशन था, ये अगर इसको cos एंड sin के फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी ऐसे, xn को हम ऐसे लिखा था 2 pi n. अगेन जस्ट गोइंग टू रिहैश इट, एप्सिलॉन sin zeta, इसको है ना, इसको आप फर्दर लिखोगे, इसका cos फंक्शन आएगा, sin फंक्शन आएगा, एक 0 आएगा बिकॉज ऑफ 0 2 pi. इसको फर्दर हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ jnx. तो वी विल डू द सेम एक्सरसाइज हियर विदाउट the steps and without those steps. अब सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ मोशन वाज इन सेंट्रलाइज्ड पोटेंशियल, यहाँ मोशन था कैसे, दो चार्ज पार्टिकल्स में भी अट्रैक्टिव और रिपेलिंग. That's why there is a hyperbolic motion. है ना, जिस तरह अल्फा पार्टिकल्स आते हैं प्रेजेंट न्यूक्लियस, वहाँ से चार्ज करते वैसे रिपेल करना है ना एज अ अल्फा पार्टिकल. So this time we are taking that exercise. Two charged particles still they will form a dipole, but उनकी motion क्या होगी, this उनकी motion होगी in terms of hyperbola, in terms of hyperbola. So
is the thing we are going to do. यहाँ तक ठीक है, this much is clear. Clear? So from this again, so we are going to जो हम यहाँ पिछले वाले क्लास में क्या था स्ट्रेट रिजल्ट this अब सिर्फ यहाँ पर एक बात है, यहाँ जो फूरियर कंपोनेंट्स निकाले थे हमने वहाँ बेसल फंक्शन निकाले थे। अब वही बेसल फंक्शन का इसका फॉर्म आएगा ड्यू टू दिस हमने यहाँ जो पैरामीटर्स लगाए थे वहाँ पैरामीटर्स थे हमारे पास जीटा माइनस साइन एप्सिलॉन साइन थीटा। यहाँ क्या है, यहाँ जीटा साइन जीटा, वहाँ जीटा एप्सिलॉन जीटा। इसकी वजह से जो बेसल फंक्शन की फॉर्म यहाँ जे एन आएगा, यहाँ इट विल बी इन टर्म्स ऑफ हर्मिट फॉर्म, इतना फर्क आएगा। यू कैन वर्क इट आउट, ठीक है। ये है ना जे एन एक्स, इसको वहाँ इट राइट इट इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन और हर्मिट फंक्शन का आपस में रिलेशन आप देखिए एनी बुक ऑन मैथमेटिकल फिजिक्स। सो जो इंटीग्रल वी गॉट इट फ्रॉम हियर जस्ट सॉल्विंग दीस पैरामीटर इक्वेशंस we arrived at j and x. Now we are going to solve these parametric equations. We are going to solve. So rather than getting j and x, we get Hermite polynomials. So you can always have a relation of Hermite polynomials in regard to the Bessel polynomial. So I'll straight away write like this: the x and omega f is the form आएगा ऐसे. इसका y ओमेगा का फॉर्म आएगा okay, so this is the form will be of x coordinate field, y coordinate field in terms of omega, and here h this is the not Hermite, Hankel. Hankel function of first kind of order nu of order. You just go and check out any book on mathematical physics and see what's the relationship, not Hermite, what's the relationship of Bessel function and Hankel function. And Hankel function of first kind, second kind, third kind of the two points. And then relate these expressions. If I have, and the integral will go from minus infinity to plus infinity. वहाँ पर integral का value क्या था? 0 to 2 pi. 0 to 2 pi 2 था. यहाँ एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, चार्ज पार्टिकल आ रहा है, it starts from infinity, it will go to after repelling कहाँ जाएगा? infinity जाएगा, तो यहाँ पर that's why जो इंटीग्रल है it will not be from 0 to 2 pi, यहाँ लास्ट वाले यहाँ पर था ना 0 to 2 pi, तो इंटीग्रल here will be minus जब आप इंटीग्रल से कैलकुलेट करोगे easy था, तो यहाँ इंटीग्रल ये अच्छा just see it. P is the yes. तो वहाँ पर इंटीग्रल हमारा आ रहा था ये, हाँ यहाँ पर वहाँ पर आ रहा था, ठीक है। तो we are form इसका cos theory into cos and sin, cos plus sin function. Cos function का है cos of pi minus cos of 0. एक इसमें it can get evaporated, one term will contribute, और उसी को in terms of हमने g n. अब यहाँ पर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये because due to the nature of जो r को हमने लिखा in terms of this and this, इसकी वजह से this will change. And rather than getting g n x, we are getting Hankel function. अब आपका काम है कि Hankel function and Bessel function का क्या relation है? From a given Bessel function, how can arrive at Hankel function of first kind, second kind, so on and so forth. So it's matter of basically go on solving integrals of different kinds.
डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू आर हैविंग। अगर डायपोल कोई बन रहा है टू चार्ज पार्टिकल्स विच आर अट्रैक्टिंग, ठीक है, जिसकी वजह से, जिसकी एक्सेलरेशन की वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज वन केस। द अदर केस में भी द चार्ज पार्टिकल्स आर कमिंग, दे आर रिपेल, जैसे अल्फा पार्टिकल आ रहा है इन न्यूक्लियस, उसका हाइड्रोजन शेप बनेगा, ठीक है, वो भी तो डायपोल है, वहाँ भी रेडिएशन क्रिएट हो रही है, बिकॉज वहाँ भी एक्सेलरेशन हो रही है। And these parameterizations and relating them to the sort of integral form acid, taking clue from our previous classes, we have arrived at Hankel functions. ठीक है, ठीक है ना? कुछ पूछना तो नहीं है? Now अब हम आएंगे अपने वाले अपने वाला come to our come we are going to come to our intensity of the radiation हमारे पास है। intensity of radiation हम कैसे लिखते हैं? हाँ, intensity ये हमारा एक्सप्रेशन। This energy of the particle is this, the omega square, or intensity of the radiation due to dipole हमारा आ रहा है, and for like 3c square। इसका पिछले वाले में जो d के है, d के बदले हम मतलब x and y लिखा है, हम do some substitutions here, ठीक है। Now इस d को हम लिखेंगे how we arrive at d for the terms x and y। यहाँ d है ना, x square plus y square, we write this square plus, but here only this in terms of angle functions, वहाँ पिछले वाले में था हमारा Bessel functions, so उसके वजह ये लिखेंगे। So we are going to substitute here in terms of what is the intensity we are going to get. So rather, or we are going to get it for total energy of the system. Okay, if you are not interested, because if you want to write it in terms of energy, then आगे पहले अगर क्या intensity में भी लिख सकते हैं या वापस energy में भी लिख सकते हैं, we can write it अपना। And again we are going to use जो हमने previous जो d है ना, d का फॉर्म हमने ऐसे लिखा था, mu times e1 by m1 minus e2 by m2 into r, ठीक है। And doing these substitution, because ये two body problem के लिए लिखा था, ये d का distance, ठीक है। So taking clue from these things, so we can write the energy of the system, or आप intensity लिख सकते हैं, energy लिख सकते हैं। चलो, book has gone for energy of radiation mu square by 3c square m1 square minus m1 minus e2 x omega square or y omega square x and x के बदले ये कौन and y के बदले ये। now we are going to substitute x के बदले the expression in terms of what? In terms of Hankel function and other Hankel function. अब जिसका स्क्वायर है ये आएगा पाई स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर में आएगा पाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा।
ये आएगा बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पर दिस स्क्वायर EH 1 प्राइम स्क्वायर एप्सिलॉन दूसरी वाली टर्म आएगी ये आएगा बाई ए इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर So we have arrived at the energy, or we can also arrive at the intensity of radiation which has been created by two charged particles. Okay? This is our thing we got. Okay? Now, obviously, ये काम है. So we are going to use our understanding of effective radiation. जब पिछली बार मैंने एक क्लास में कहा था ना effective radiations. जैसे there are lot of particles which are colliding with each other. तो dipole radiation तब प्रोड्यूस होती है when the charges are accelerating. अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो dipole radiation नहीं प्रोड्यूस होती क्योंकि वहाँ फैक्टर में आता है G डॉट का स्क्वायर. G डॉट मीन्स एक्सेलरेटिंग डायपोल प्रोड्यूस रेडिएशन. अब एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होती है when चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग. एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब नहीं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती. जब रिलैक्सेशन टाइम होगा स्मॉल दो वहाँ से बंदा आएगा यहाँ से बंदा आएगा नहीं कोलाइड तो थोड़ी टाइम के लिए चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी थोड़ी टाइम के लिए उसी टाइम वो रेडिएशन प्रोड्यूस होगी. अब एक रेडिएटिव पार्टिकल नहीं है मिलियंस ऑफ रेडिएटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस या ड्रूड मॉडल हो गया सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल है ना इलेक्ट्रॉन सी गैस होगा. ठीक है तो फॉर मोमेंट्स वो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है. अदरवाइज आपको इनका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का रेडिएशन तो आप उसके इमेजिन करने के लिए हमने कैलकुलेशन किया था. हमने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन लिया था टू कंसंट्रिक सर्कल्स में एक स्फीयर लिया उसका फिर हमने कंसंट्रिक उसमें सॉलिड एंगल निकाला उसका इंटीग्रल कैलकुलेट किया था बिटवीन दीज टू जो भी रेंजेस थे हमारे. वहाँ से हमने निकाला था इफेक्टिव रेडिएशन का वैल्यू ड्यूरिंग द स्कैटरिंग ऑफ पैरेलल बीम ऑफ पार्टिकल C68 सेक्शन 68 dipole radiation due to collisions. ठीक है so how we calculated the dipole radiation due to collisions. तो वो वाली अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प अस फॉर दिस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे. सो कैलकुलेटेड टू मल्टीप्लाई जो मैं कह रहा था बाय 2 पाई रो u ये सर्कमफ्रेंस ऑफ ए गिवन जो भी है. अब ये है इट माइट बी वैरी फॉर रो का वैल्यू कैसे वैरी करेगा फ्रॉम गिवन रेडियस टू गिवन रीजन में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है चार्ज पार्टिकल्स. वहाँ से हम निकालेंगे फिर उसका एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे. सो वी हैव टू कैलकुलेट वी हैव टू रिपैरामीटराइज दिस इन टर्म्स ऑफ this entire process is basically going between two regions. Two regions जहाँ पे ये fluctuations प्रोड्यूस हो रही हैं. Fluctuations में charged particles they are repelling or they are attracting whatever they are जिसकी वजह से acceleration प्रोड्यूस हो रहा है in terms of dipole and जिसकी वजह से radiation प्रोड्यूस हो रही है. So हमको वो region कैलकुलेट करना पड़ेगा. उस region का circumference है this 2 pi r rho है. आप उसी rho या radius वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. It can go from -infinity to +infinity. ठीक है. Or it can go to value कोई भी finite region. We can calculate infinity. Infinity means in physics very large numbers. It's not infinite mathematical infinity. Okay? In physics, normally physicists and mathematicians में क्या फर्क होता है infinity? Mathematics में infinity is really abstract infinity. If you do points, then can be infinite points. Or parallel lines can never meet. Or they can meet at infinity. Is another statement. But in physics normally when you take infinity, infinity is a relative term.
It is greater than or very large thing. ठीक है, in our given calculation हमारी क्या है? Sometimes we can also infinity को हम नेग्लेक्ट करते हैं, हायर ऑर्डर टर्म्स हम फर्स्ट ऑर्डर कंट्रीब्यूशन, जैसे हम लैग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल या ना हम हैमिल्टोनियन टर्म निकालें, क्या था उसका डार्विन टर्म निकालें, हमने सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन तक कैलकुलेट किया. इफ यू वांट टू टेक मोर इंटरेक्शन यू कैन गो फॉर हायर ऑर्डर इंटरेक्शंस. या रिलेटिविस्टिक में हम क्या करते हैं अक्सर वहाँ माइनस स्क्वायर बाई यहाँ निकालते हैं 1/2. वो ओनली टेक करेक्शंस अप टू फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर. इसका मतलब नहीं कि हायर ऑर्डर इंटरेक्शन नहीं होंगे. हम कहेंगे कि इंटरेक्शन में अकाउंट मतलब बड़ा है तो इफेक्ट्स में भी स्मॉल और नेग्लेक्टेड. एंड व्हेन वी गो टू हायर थिंग्स लाइक क्यूईडी वहाँ में वी टेक हायर ऑर्डर टर्म्स लाइक लैम्प शिफ्ट आउटपुट होगी, वहाँ उसकी वैल्यू आता है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग आता है. इट्स द थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट का है ना एक रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स पीपल आर कैलकुलेटिंग हायर ऑर्डर परटर्बेशंस, वहाँ जो टर्म्स निकलती हैं वो इंटरेक्शंस आती हैं, दे एक्सप्लेन समथिंग हायर समथिंग मोर फाइनल, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, लैम्प शिफ्ट. बट यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ हो क्या रहा है, व्हाट इज द गेम क्या है, ठीक है. एंड व्हाट इज इन्फिनिटी इन अ गिवन पॉइंट, व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, व्हाट वी आर इग्नोरिंग, है ना. Which contributions we are ignoring in a given setting and which contributions we are taking in, उसका लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है. In the same way we are going to take integral, वहाँ हमने लिया था integral 0 to pi, यहाँ हम integral लिया था माइनस ये लिया है क्या माइनस infinity plus again अगेन जो ये फॉर्म है ना इंटीग्रल की, इसको फर्दर हम सिंपलीफाई करेंगे. अगर आप जाओगे पूछते तो बेसल फंक्शन का ऐसे इसका फॉर्म है ऐसे, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर में z स्क्वायर माइनस z p स्क्वायर d by dp z ऑफ z. तो ये है इसका फॉर्म अंदर, ये इसका फॉर्म और है एज इट इज योर सॉल्व है ना एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 by एप्सिलॉन स्क्वायर. So it's also a form of a differential equation, a Bessel differential equation. ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये एंड यहाँ इसका फॉर्म एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 by एप्सिलॉन स्क्वायर, इसका फॉर्म ये है स्क्वायर बाय z स्क्वायर माइनस 1. So you can further simplify it as a consequence of this step is a consequence of Bessel function, and further we can just see it and Bessel function को in terms of Hankel function लिखा for epsilon going for infinity, for epsilon going to infinity. अगर epsilon बहुत ज़्यादा है the second term will not contribute. ये है epsilon square वो है ये नेगेटिव हो जाएगा and negative this term. And first term will be here. ये square है दो बार है तो we can also write it like this. Of 5 omega by c square by e1 by m1 minus e2 by m2 equal h equal स्क्वायर में है. और जो भी मैं कह रहा था इंटीग्रल जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं इट कम आउट from infinity minus infinity plus zeta minus sine of h zeta.
want to name the integration. अब ये कि for values again we are going to get यहाँ है omega ये है ये you can write omega in terms of frequency also. Omega है ना 2 pi by t 1 by t हो गया frequency. So जो एनर्जी यहाँ से क्रिएट हो रही है बेसिकली हम यहाँ एक तो एनर्जी भी निकाल सकते हैं या इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं. अब ये एक्सप्रेशन है एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन क्या है which is produced due to this जो उस रेंज में प्रोड्यूस हो रही है रैंडम थिंग्स आर कोलाइडिंग उसका इफेक्टिव कोलम्बिक इंटरेक्शन क्या है. So that's also dependent on the frequency of the particles. ठीक है. अब ये ओमेगा ऊपर है फ्रीक्वेंसी आएगा नीचे आएगा 1 by t आएगा. तो ये दिस एनर्जी जितनी फ्रीक्वेंसी पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी कोलिजन्स की उतना ये एनर्जी ज़्यादा होगी. ठीक है. एंड दैट विल बी इन दिस इंटीग्रल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हैंकेल फंक्शन. So it's not a matter of calculating this integral in terms of Hankel function and this frequency alpha mu जो भी है we can calculate intensity as well as energy of those charged particles. ठीक है. तो हमारे लिए you can get some numbers experimental numbers जो आप लैब में भी दे सकते हैं. 1000 इलेक्ट्रॉन्स आप कोलाइड कर रहे हैं वहाँ से क्या रेडिएशन गिवन रीजन होगा. ठीक है. You can calculate this thing from this thing. ठीक है. अब further you can by the logic of the book take further approximations. First order as of acid phobia. Also equivalent to this. यहाँ दो बार so twice आएगा. So you can further write अगर आपको थोड़ा सा इसमें आप मैथमेटिकल फिजिक्स की कोई बुक देखना बेसल फंक्शंस हार्मोनिक फंक्शन हैंकेल फंक्शन कैल फंक्शंस इन डिफरेंट फॉर्म उसका एक फॉर्म बेसिकली दे आर डिफरेंट इक्वेशंस है ना फॉर उसके हाउ कैन राइट बेसल इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक उनका आपस में क्या रिलेशन है. ठीक है. वो आप चार्ट बनाना बिकॉज दैट नॉलेज इज यूजफुल. इसलिए हमारा बेसल फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं नहीं हर हैंकेल फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं log gamma x. ये gamma is equal to it was c is the error constant. So if you just can write this Hankel function like this from your knowledge of mathematical physics, so this expression can further be simplified or it can be also in terms of our redefinition of Hankel functions like this in terms of log and substituting here and at one use approximately from this which is further simplified and write it like this. Here omega is less than mu. अब ये now we can always go for frequencies mu greater than 1 or less than 1 and accordingly substitute here. अब अगर हम इसको इंटीग्रल को देखें ना एट हैंकेल फंक्शन अब अगर इसको इन टर्म्स ऑफ जो हमने यहाँ पर किया ना इन टर्म्स ऑफ यहाँ करेंगे सबस्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस इंटीग्रल को हम इसका वैल्यू यहाँ डालेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल करेंगे तो यू कैन राइट इट फॉर टू सबस्टिट्यूट जिसका हम निकाल मैक्सिमम फंक्शन किया था के 1/3 के 2/3 सीरीज में आ रहा है के 5/3 ठीक है. अब दो गामा फंक्शंस हैं ठीक है गामा 1 गामा 1/2
गामा 3/2 गामा 5/2 है ना, जो सीरीज आ रहा है, तो वी नो दैट, तो हम H1 nu जो है इसको ऐसे लिखेंगे, ये आ रहा है तो गामा। दूसरा वाला आएगा ऑल्सो राइट पाई रूट ऑफ 360 गामा एंड फर्दर जो हमारी गामा फंक्शन की फॉर्मूला है गामा ऑफ x इंटू गामा 1 माइनस x, आप देखिए चेक गामा x अलग 1 है, ये 1/2 है, अलग ये 2 है, ये 3/2 है, इसी तरह 5/2 7/2 might have done in your second year mathematics gamma functions of your segregation. So this is one of the properties pi by sin, and ये value of j integral को calculate करती है and do it here, this proper substitutions here, तो हमारी जो equation है उसका simplified form आएगा energy of effective interaction of effective Coulombic interaction का form आएगा by the proper substitution of this here and this सब करके it will come out. Or that is an expression which is independent of frequency. Here it is independent of frequency. And now we proceed radiation accompanying collision of two particles repelling each other according to the Coulomb's law. अब हम आ रहे हैं now we are coming to how radiation is produced. तो alpha particle की example है. Alpha particles comes in presence of head. You know alpha particles is twice the d. Okay, but we are taking it as a one particle as an example analogy. So basically previous class में हमने क्या था, that will produce but two charges. Okay, that will be attracted उसका वो expression करेंगे. अब इसमें हमने आप लेंगे two particles repelling each other by Coulombic interaction. Coulombic interaction में आएगा again we are going to do this thing, इसका आएगा ये sorry, the previous वाला हमारा जो था I will just talk. We consider collision of two attracting charged particles. Actually maybe I have used words वो जो previous जो भी हम कर रहे थे, it was for two charged particles. They are attracting. Now we have two charged particles. Now they are repelling. So I was wrong. Class में मैंने है ना जितनी बार भी मैंने वो है ना कहा था कि particles are. So I am expunging my words. Expunge अब मैं past में यूज कर सकता हूँ. अब correction कर लीजिए. ठीक है? So the first case was collisions of two attracting particles. We consider collision of two attracting charged particles. Now two repelling charged particles. अब इसमें चार्ज अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग में सिर्फ ये है, वहाँ ये था ना अट्रैक्टिंग में, वहाँ ये प्लस था, यहाँ ये माइनस बस. एंड अगेन उसका reparameterization in terms of epsilon cos of zeta e times and theta. All these calculations इसमें भी again x मेगा का वैल्यू आएगा. अब
इसमें ये फर्क आ रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन में ये फर्क आ रहा है। मैं इसमें ये है कि आफ्टर डूइंग दिस उसको आप फूरियर फॉर्म में लिखेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्शन में ये आ रहा है फर्क, additional factor of e to minus 2 pi r. For low frequencies, we get the previous formulas, and for low frequencies, हमारी formula ये आ रही है, and for high frequencies, ये आ रहा है। So this was our working duties. I just go to summarize it. When I raise this, it drops exponentially with increasing frequency. अगर आप frequency increase करोगे, ये है e to minus x, ये आएगा 0 में, ये कम होगा, drop हो जाएगा, frequency ज़्यादा होगी. So I just summarize ये लोगों ने we are basically trying to find effective Coloumbic potentials due charged particles. पहले में था attractive, I was wrong, I just said repel. दूसरे में हमने लिया था, so by doing the proper लास्ट में हमारा आ रहा था मैक्रोनोमिक फंक्शंस। अब इस लाइन में लास्ट में हमने यूज किया था बेसिक फंक्शंस, यहाँ इंटीग्रल में हमने यूज किया था हैंकेल फंक्शंस। And we have to find the relation between Hankel function and the Bessel functions. And appropriate choice of integral was 0 to 2 pi. यहाँ minus infinity to Fourier transform जो भी सब कुछ वो कर करके at the end you get this equation for Coulombic potential attractive Coulombic, which is independent of frequency. ये आ रहा है for. And if you do the same thing for repulsive particles, two charged particles which are repelling, तो यहाँ हमने सिर्फ वहाँ 1 plus ये था, यहाँ minus 1, starting from this equation, and this one minus यहाँ plus. Again we are going to get और इंटीग्रल को यहाँ से करके we are going to get this integral formula. अब इस फॉर्मूला में for lower frequency the formula will match, ठीक है? But for a higher for higher frequency, that effective radiation has this form. Okay. Go to point. So these are two cases of finding dipole radiation for attractive case as well as for repelling case. But we are using also जो भी है effective interaction of finding collisions of particles. वो हमने वो effective cross section निकाला, जब integral calculate किया था 2 pi rho d वाला, ठीक है? जितना हमने क्लास में किया ना, इससे आपको यू हैव टू एक दो क्लास अपनी जगह मोर घर पर टू जस्ट वेरीफाई ईच एंड एवरी टर्म। जब तक आप वो टर्म वेरीफाई नहीं करेंगे तब आपको आएगा ना फर्क पता, मतलब रिपल्सिव केस एंड अट्रैक्टिव केस में क्या फर्क आ रहा है, फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस क्या है, वेयर डू दे मैच एंड वेयर डू दे डाइवर्स। इफ यू डू इट एट योर प्लेस एंड डू द कैलकुलेशंस एट योर प्लेस अपनी जगह कॉपी पेंसिल में, ठीक है? इसमें दो और ये है ना वर्किंग ऑफ ऑल द फैक्टर्स, वहाँ ये वाला ये देखना है आपको, बेसिक फंक्शन में इस कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जहाँ जस्ट गाइड मैथमेटिकल फिजिक्स यू जस्ट गो देयर back and forth, then it will be very interesting. Okay?